Good evening, my friends and my fellow trading members, and good evening to my दोस्त also. ये ब्लॉग ये वीडियो अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. So my friends, don't worry if I mix Hindi and English here. I'll be dedicatedly recording the English part in the first half and हिंदी पार्ट में सेकंड हाफ में करूँगा. और मैं डिस्क्रिप्शन में जो इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूँगा कि हिंदी पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आप वहाँ पे स्पीड अप करके आप हिंदी पार्ट देख सकते हैं. सो माय फ्रेंड्स एंड माय दोस्त, आप I hope you are listening to my podcast. You can listen to my podcast on Billionaire Traders Club. You can listen to it on Apple Podcast, on Breaker, on Google Podcast, on Pocket Casts, on Radio Public, on Spotify. These are the public places where you can listen to my podcasts, Billionaire Traders Club. And soon I will be adding few more features to it, along with regular updates on a daily basis or intraday daily basis. I'll be updating my views on some stocks. You can also listen to or watch my trading videos. Some of the popular videos are where I have told you about how scammers can be caught. About my there are some playlists that are there, where I have analyzed FI, DI data, option selling with hedging. I have also analyzed a few stocks, as in how you can find out about stocks, certain tricks and of the trade about option trading. So you can go and listen to these and view these videos there, and hopefully you can learn some of them. So I'll be uploading a lot more videos on the educational playlist going forward, and I hope you can learn something out of it and be profitable. And there are many in my channel who are already profiting. Now coming back to our daily routine as to what is happening in the market, global market. Now let's start with the Asian markets, which are closed at the moment. We don't usually see the Australian, New Zealand thing, but they were negative. If you look at SET, Kospi, Taiwan, Hang Seng, these Hang Seng was down by almost 1.84%, that is 469.02, closed at 1:30 p.m. Indian time. Taiwan closed at around 11 a.m. Indian time. And then next we can look at Nikkei, which is Japanese, which closed at 11:30 a.m. and it was down by 0.52%. This is 152, 158 points. Shanghai Composite again 6 points and 89 points, 89.77 points. So these are some of the important Asian stocks that we look into. And looking at this, you would think that Indian markets would fall, but Indian markets, obviously, as a lot of us know, that has not fallen. Coming back to Indian markets, we'll look into it later on. If we look at the European markets, these are the European markets. Some of the main European markets are the German market, DAX, the London market, the French market, etc. German market obviously leads the Euro section, and after Brexit, the London and British market can be looked at separately. And these are still open at as of 8:13, and I believe that they had fallen, but they have risen a bit today. If we look at the
American market, US market, they are positive but flattish. We will look into Dow futures soon. Indian markets, of course, Nifty, Sensex, Nifty Bank, they have really done well today, and that has happened because of a lot of buying. But we see that Nifty VIX is positive also, which could also indicate a fall tomorrow. So at times, market participants, the bigger participants, tend to create a illusion of bullishness to take the market down. Even though this is the second expiry of the month, we need to be very careful whether we carry bullish positions or bearish positions. Look at dollar at the moment. Dollar, where I would give full disclosure, I have some positions and I have bearish positions. I believe that since market is going up, dollar would go down. Also looking at the dollar, US dollar index, due to the recent news of lower inflation, the US dollar index has fallen. It is not able to sustain above 92, 93. Actually, it has not been above 93 for a while, and 92.750 is finding it as a tough resistance. SGS Nifty currently is falling, and this could be precursor to what will happen tomorrow. By falling, I mean it is still above 17,400. So we will have to look into it tomorrow. Dow Jones at the 5-minute did go above 200, but it seems that it has hit a resistance. At 15-minute chart, it is still below 200 days moving average, and unless it goes above 200 days moving average, I don't consider it bullish. So one thing that I do consider that Indian markets are diverging away from US markets. This I have talked to many of my members that US markets may be going away and diverging. As we can see on the chart, and it is self-evident, Nifty, once it opened, it did not gap up open, it opened positively. It had a direct non-unidirectional run, and it kept on moving straight. If we draw a trend line here, it kept on moving straight ahead, and it broke through any records and made all-time high after all-time high. Bank Nifty also is making all-time highs, and it also had a one-way street except for a sideways movement during the 11 to about 1 o'clock period, and then it zoomed up. Obviously, if it is a sideways movement, a lot of tension does get built up. So either a bullish move or bearish move can come. So if we draw VWAP, if it was above VWAP, so traders could have taken advantage of this thing. Once it touched VWAP and was not able to go below that, they could have taken bullish trades. Nifty again was above VWAP and to 20 EMA. So as long as 20 EMA was taking care of it, we should have kept on moving up. Let's look at DAX. DAX again is something that as I said that this is UK 200. It had been negative for a while, and it kept on moving negatively. So it seems that maybe Indian stock market is diverging against the global markets, where global markets are facing difficulty in moving up and is facing a lot of resistance. Indian markets are just keep on moving. So either my conclusion is either there is some sort of index management going on or some manipulation, and though I don't want to
say, call it directly a manipulation or a bubble, one needs to be very careful while managing their stocks, and one should keep on booking their profits as on timely basis. Looking at some other stocks, I have recommended GAIL to my friends, to my people, and GAIL has done a pretty good trade, and it has fallen a bit. What one can take profit in GAIL. ZEAL again on the back of buying by Rakesh Jhunjhunwala did move almost 30-35% yesterday. Today it did fall. It fell by around 2%, and I still believe it is a good stock, and one can buy it from here. Though I believe that it is better to wait for a while than to hesitate, than to hurry up and start buying and then see a big fall in here. Obviously 255.90 is not based on its fundamentals. If one goes by the fundamentals, yesterday's buying was obviously something that happened based on certain rumors and news, and it affected the sentiments. I just talked about sentiments yesterday, so once the sentiments cool off, we do have a issue. Let's talk about expiry now. So let's first look into Nifty. Nifty's, these are the extract from the option chain. Option chain also I will show that extract that I have. Currently this is where your various participants are holding their maximum options. This is the buying done by input by clients and EI. This is the buying done by FI and Pro at 18,000. These are where there is highest options. This is the option selling done by clients and DI, and this is the option. This is the option selling, input selling done by FI and proprietary desk. And if we look into the option chain, we do find that the put rating at 17,500 has higher open interest, which could change tomorrow also. So I would be careful in taking bearish positions, though because of PCR is also high. The option pain is at 17,400. So I expect the expiry to happen anywhere between 17,400 to 17,500. So I expect it somewhere around 17,450. This is just an expectation, not a exact number. Now looking at into Bank Nifty. Bank Nifty this is the option chain extract with the highest open interest taken here. We do find that if we look into the sentiments part of it, we find that this is the option buying, put buying by client and DI. This is call buying by FI and PRO. They do it to hedge their positions. Buying is done to hedge their positions. Institutions usually do their maximum of options in writing, but this is the hedged positions that is displayed here. They can obviously buy at different positions, so where high open interest may not show, so they might have hedged at this point and bought or sold puts at various positions. But here client and DI are clearly showing they have written call at 36,900. So again, if we come back to their option chain, we find that PCR is approximately 1 and option pain is approximately at 36,700. So
I expect the expiry to happen somewhere in between 36,700 and 36,900. So 36,800 would be the approximate area where I would expect the expiry to happen. Now switching into Hindi ट्रेड्स. तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी इंग्लिश में बातें कर रहा था, तो अभी हम थोड़ी बहुत हिंदी में वार्तालाप कर लेते हैं. तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को अभी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में एशियन मार्केट्स में काफ़ी लहूलुहान दिख रहा है, लाल दिख रहे हैं. निक्केई जो कि जापानीज़ मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, शंघाई, चाइनीज़, हैंगसेंग, सेट, कॉस्पी, ये सब अभी हमको लाल में, ज़्यादातर लाल में दिख रहे हैं, जो कि क्लोज हो चुके हैं. और सेट और कॉस्पी जो इंडोनेशियन मार्केट्स के हैं, अभी हमको हल्का ग्रीन दिख रहा है. तो और सॉरी, कॉस्पी एक सिंगापुर मार्केट है जो कि अभी लाल में दिख रहे हैं. तो इससे लगता है कि एशियन मार्केट्स से लगता था कि इंडियन मार्केट्स भी रेड में होने चाहिए, बट वो हुआ नहीं. अगर हम अपने यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यूरोपियन मार्केट्स भी कुछ खासा नहीं था. डैक्स 100 पॉइंट्स नीचे है. अभी यूरोपियन मार्केट्स में लंदन मार्केट भी नेगेटिव गया है. बाकी के मार्केट्स भी लाल दिख रहे हैं. एंड ये मार्केट्स भी देख के अगर हम इनके चार्ट्स भी देखें तो पहले से ही नेगेटिव है. थोड़े बहुत इसमें उतार चढ़ाव आए थे. डाउ जोन्स जिसकी चार्ट्स हम अभी देखेंगे, डाउ फ्यूचर्स वगैरह की, भी हल्के से पॉजिटिव है. फिर सवाल ये उठता है कि इंडियन मार्केट्स इतनी ग्रीन क्यों है. ये सवाल का जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ. अगर देना भी चाहूँ तो शायद गलत हो जाए. बस इतना कह सकता हूँ कि शायद मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी है, या फिर हो सकता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैनिपुलेशंस चल रहे हैं. आइदर वे, क्योंकि एफआईआईज की बाइंग हो रही है, डीआईआईज की बाइंग हो रही है, तो हम इसको मैनिपुलेशन बोल नहीं सकते हैं. अगर हम अभी यूएसडी आईएनआर देखें तो यूएसडी आईएनआर काफ़ी नीचे गिरा है. इसमें मेरे खुद की पोजीशंस हैं. आफ्टर निफ्टी वेंट अप, मैंने ये बताया है कि निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन है. तो निफ्टी और यूएस डॉलर इंडेक्स के कोरिलेशन है, और इसको देख सकते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स ज़्यादा ऊपर उठा नहीं है. इनफैक्ट 93 भी नहीं गया, 92.70 के आसपास ही इसमें रेजिस्टेंस बन गया है. तो डॉलर वगैरह को देख के हमको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में काफ़ी उछाल हुआ है. ये एसजीएक्स निफ्टी भी देखें, जो कि निफ्टी के फ्यूचर्स का ट्रेडिंग सिंगापुर इंडेक्स में होता है, सिंगापुर एक्सचेंज में होता है. ये भी थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, साइडवेज मूवमेंट हुआ है थोड़ा बहुत. मतलब ये अभी भी 17,500 के आसपास ही घूम रहा है. डाउ को देखेंगे तो डाउ 1 आवर चार्ट में बिलो 200 है, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं थोड़ा. डाउ जोन्स का अभी का हम देखेंगे तो डाउ जोन्स 200 डेज मूविंग एवरेज में 15 मिनट्स के चार्ट में नीचे है. तो ये जो ये एक बियरिश साइन है. डाउ फ्यूचर्स का अभी हम देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है ऑन 5 मिनट्स.
एंड 1 आवर में और भी नीचे है, तो ये एक बियरिश ही मानेंगे हम इसको। S&P 500 हल्का सा पॉजिटिव है, नैस्डैक नेगेटिव है, फ्लैटिश है। तो ये देखकर हमको थोड़ा सा चकित होता ही है कि किस तरह से ये मार्केट मूवमेंट्स कर रहे हैं। हम बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रेडिंग व्यू देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम देखते हैं कि निफ्टी सुबह से ही ऊपर की तरफ चला, इसमें कुछ खासा गैप अप नहीं हुआ था। ये वीवैप के ऊपर ओपन हुआ 5 मिनट्स के चार्ट में। तो हम लंबे ड्यूरेशन 30 मिनट्स के इसमें भी देख सकते हैं कि ये वीवैप के ऊपर ही खुला है, और वीवैप के ऊपर खुलने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें यूनि डायरेक्शनल मूव था, और अभी एंड के तरफ इसमें जिगजैग में थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है। हो सकता है कि मूवमेंट कल की तरफ नीचे जाए, मे भी हो सकता है। अभी ये बुलिश मूव भी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में भी जब ओपन हुआ तो ये हल्का सा नीचे था, बट फिर उसके बाद वीवैप के ऊपर जाने के बाद ये 200 डेज मूविंग एवरेज के साथ साथ सट के ऊपर की तरफ ही चलता रहा। तो ये काफ़ी बुलिश था, और शायद आगे भी बुलिश ही रहेगा। इंडिया विक्स हालांकि पॉजिटिव है, इसमें थोड़ा चढ़ाव तो आया था, बट उसके बाद नीचे गया है। इंडिया विक्स का पॉजिटिव होना भी बियरिशनेस का निशानी देता है। हम आगे देखते हैं अपने थोड़े से चार्ट्स के ऊपर। ऑप्शन चेन के डेटा जो हम लोगों ने पुल किया है, ये ऑप्शन चेन ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये डेटा काफ़ी, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा FI DI डेटा को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि क्लाइंट्स एंड DI ने पुट ऑप्शंस बाई किए हैं, यहाँ पे FI PRO ने कॉल ऑप्शंस बाई किए हैं, यहाँ पे क्लाइंट DI ने कॉल ऑप्शंस को सेल किया है, यहाँ पे FI PRO ने पुट ऑप्शंस को बाई किया है। और अगर हम लोग टॉप चार्ट एक्सट्रैक्ट को देखें जो कि डायरेक्टली NSE साइट से लिया गया है, तो हमको पता चलता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कि एट द मनी है वो पुट का है, विच इज़ एट 1,16,136। तो इससे जो कि कल के दिन में चेंज हुआ है, तो इससे हमको तो हल्का सा बुलिश व्यूज़ दिख रहे हैं, क्योंकि 17,500 पे FI PRO ने पुट ऑप्शन सेल किए हैं, तो इससे ऊपर जाने की संभावना है। बट उसके बाद कल क्योंकि एक्सपायरी है, अपने पोजीशंस क्लोज भी हो सकते हैं। तो इससे हमको ये अंदाज़ा लग सकता है कि शायद मार्केट में क्योंकि PCR पॉजिटिव है, एक बुलिश साइन है, बट ऑप्शन 10 17,400 पे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे मार्केट्स टर्न करे, रिवर्स करे। यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग भी है, तो ये राइटिंग और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कीपिंग दोज पॉसिबिलिटीज़, मुझको लगता है 17,450 के आसपास कल एक्सपायरी हो सकता है। तो इस तरह से हम आगे बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में
अब देखिए ये पोजीशंस क्लाइंट्स एंड डीआईएस ने यहाँ पे पुट बाइंग किया है। एफआईआई पीआरओ ने 37,500 एंड 38,000 में बाइंग किया है। और खासकर यहाँ पे देखिए क्लाइंट डीआईए ने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया है, कॉल ऑप्शन सेलिंग किया है 36,900 में। इसका पीसीआर इज अबाउट 1, नॉट ग्रेटर देन 1, विच इज स्लाइटली बेयरिश एंड ऑप्शन पेन इज एट 36,700। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट हो, क्योंकि काफ़ी आज चढ़ाई हुई है, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। तो इस अंदाजे से मुझको लगता है कि 36,800 के आसपास एक्सपायरी कल हो सकता है। तो इस अंदाजे से मैं ये दो चीज़ बताना चाहता था। तो मैं यहीं पे साइन ऑफ करूँगा। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ माय फ्रेंड्स, माय फेलो ट्रेडर्स, and I wish all of you to have a happy and profitable expiry day and further happy and profitable trading life. This is Ayan Sinha signing off from Billionaire Traders Club. Kindly, if you like my videos and my podcast, kindly press the like button, share my videos, and also subscribe to my YouTube channel and my various podcast channels too. Thanking you a lot. This is Ayan Sinha.